নমস্কাৰ মই ঋতুস্মিন শৰ্মা দিল্লীত ২৬ জনৰ হিংসাৰ সময়তে এজন কৃষকে মৃত্যুক সাবটি ল'ব লগা হৈছিল তেওঁক ইতিমধ্যে শহীদ ঘোষণা কৰিছে প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে আৰু সেইজন কৃষকৰ পৰিয়ালৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে আজি প্ৰিয়ংকা গান্ধীকে ধৰি অন্যান্য কংগ্ৰেছ নেতা দিল্লীৰ হিংসাৰ সময়তে মৃত্যুক সাবটিছিল দুৰ্ভগীয়া প্ৰতিবাদী কৃষক নৱব্ৰীত সিঙে নৱব্ৰীত সিঙৰ বাসগৃহত প্ৰিয়ংকা গান্ধী আৰু অন্যান্য কৃষক নেতা আৰু কংগ্ৰেছ নেতা উপস্থিত হৈছে নৱব্ৰীতৰ শোকসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কৈছে যে নৱব্ৰীতৰ বয়স 25 কিন্তু মোৰ পুত্ৰৰ বয়স 20 তেওঁ মোৰ পুত্ৰৰ নিচিনা এই ত্যাগ নৱব্ৰীতৰ এই ত্যাগ অথলে নাযায় এয়া প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ঘোষণা কৰিছে নৱব্ৰীতৰ পৰিয়ালে ন্যায়িক তদন্তৰ দাবী কৰিছে এই মৃত্যুৰ ঘটনাৰ আৰু এই দাবী সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰি ন্যায়িক তদন্ত বিচাৰিছে এতিয়া প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালক জ্ঞাপন কৰিছে সমবেদনা আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো প্ৰিয়ংকা গান্ধী নিজে সেই শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালটোৰ কাষলৈ গৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে আমি এইখিনি উল্লেখ কৰি থৈছোঁ আমাৰ হাতত আৰু এটা দৃশ্য আছে সেইটো দৃশ্য সম্ভৱ হ'লে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া প্ৰিয়ংকা গান্ধী গৈছে নৱব্ৰীত সিঙৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ সেই বাসগৃহলৈ আৰু সেই বাসগৃহতে আয়োজন কৰা হৈছিল এখন শোকসভা আৰু সেই শোকসভাত ভাষণ দি আবেগ বিবল হৈ পৰা প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কৈছে যে এই মৃত্যুক সাবটি লোৱা নৱব্ৰীতৰ বয়স হৈছিল মাত্ৰ 25 বছৰ আৰু মোৰ পুত্ৰৰ বয়স মাত্ৰ 20 বছৰ নৱব্ৰীতৰ এই ত্যাগ অথলে নাযায় বুলি প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কি কৈছে প্ৰথমে শুনাই দিছোঁ नवब्रीत जी के परिवार के सदस्य उनका कौम आसपास से आए हुए सब लोग यहाँ उनकी याद में आए हैं मुझे अपने अनुभव से मालूम है कि एक शहीद का परिवार उसकी शहादत को कभी भूल नहीं सकता वो उस शहादत को अपने दिल में रखता है हमेशा के लिए और उस शहादत से उसके दिल में सिर्फ एक तमन्ना जागती है कि अपने प्यारे की शहादत व्यर्थ ना हो और मैं जानती हूं कि आप सबके दिल में यही तमन्ना है नवब्रीत 25 साल के थे मेरा बेटा 20 साल का है आपके भी नौजवान बेटे हैं जो उत्साह में अपनी उत्साह दिखाने के लिए किसानों के साथ खड़े होने के लिए वहां चले गए और उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि वो वापस नहीं आए क्यों गए थे वहां कोई राजनीतिक साजिश नहीं थी कि वो वहां गए वो इसलिए गए क्योंकि उनके दिल में दुख था उनके दिल में किसानों की पीड़ा थी उनको मालूम था कि जुल्म हो रहा है और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि जुल्म करना पाप है लेकिन जुल्म को सहना उससे भी बड़ा पाप है और हो सकता है कि यही सोचते हुए एक नौजवान बच्चा दिल्ली से इतनी दूर से दिबदिबा से दिल्ली पहुंचा कि हाँ वो भी शामिल होगा वही उम्मीद रखते हुए कि उसकी सुनवाई होगी আৰু সেয়া প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ মন্তব্য তেওঁ কৈছে যে অন্যায় সহি থকাটো সমানেই এটা পাপ যিদৰে অন্যায় কৰাটো পাপ সেইদৰে অন্যায় সহি যোৱাটো পাপ আৰু নৱব্ৰীত সিঙৰ এই ত্যাগ অথলে নাযায় ইতিমধ্যে প্ৰিয়ংকা গান্ধী উত্তৰ প্ৰদেশৰ সেই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ কাষত থিয় হৈছে তেওঁলোকে আয়োজন কৰা শোকসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ কৈছে যে মোৰ ল'ৰাৰ বয়স 20 বছৰ আৰু প্ৰায়তঃ নৱব্ৰীতৰ বয়স মাত্ৰ 25 বছৰ
नवरीत जी के परिवार के सदस्य, उनका कौम, आसपास से आए हुए सब लोग यहाँ उनकी याद में आए हैं। मुझे अपने अनुभव से मालूम है कि एक शहीद का परिवार उसकी शहादत को कभी भूल नहीं सकता। वो उस शहादत को अपने दिल में रखता है हमेशा के लिए, और उस शहादत से उसके दिल में सिर्फ एक तमन्ना जागती है कि अपने प्यारे की शहादत व्यर्थ ना हो। और मैं जानती हूं कि आप सबके दिल में यही तमन्ना है। नवरीत 25 साल के थे, मेरा बेटा 20 साल का है। आपके भी नौजवान बेटे हैं जो उत्साह में अपनी उत्साह दिखाने के लिए, किसानों के साथ खड़े होने के लिए वहां चले गए, और उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि वो वापस नहीं आए। क्यों गए थे वहां? कोई राजनीतिक साजिश नहीं थी कि वो वहां गए। वो इसलिए गए क्योंकि उनके दिल में दुख था, उनके दिल में किसानों की पीड़ा थी। उनको मालूम था कि जुल्म हो रहा है, और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म को सहना उससे भी बड़ा पाप है। और हो सकता है कि यही सोचते हुए एक नौजवान बच्चा दिल्ली से इतनी दूर से, दिबदिबा से दिल्ली पहुंचा कि हाँ वो भी शामिल होगा, वही उम्मीद रखते हुए कि उसकी सुनवाई होगी।